चटोरी चीनी खो। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर। जीती जाती चीनी चटोरी चीनी खो। कितना मुश्किल है ये गाना, जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चो गन्ना चीखे चो। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़के खड़क सिंह का खड़के से। चंदा चमके चम चम चीखे चो गन्ना चोर। जीती चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। क्या है ना, मैं बहुत दिनों से कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरे पले ही नहीं पड़ रही। इसको कैसे सीखते हैं? मैं आपको बताऊँ मैं क्या सीख रही हूँ, पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? If you need a program to program a program, how do you program programs to program programs? हाँ, ये है क्या? Hi. Wayne went to Wales to watch walruses. Wayne went to Wales to watch walruses. Wayne went to Wales to watch walruses. Right. Gundecha Education Academy Kandivali presents Tagalog, the Don't Laugh Challenge. Join us in this rib-tickling, tongue-twisting, topsy-turvy, terrific time of togetherness. Tongue twisters are a great way to practice and improve pronunciation and fluency. They also help to improve the accent by using alliterations, which is the repetition of sound. They are not only used by kids, but by actors, politicians, public speakers. And if you can master them, you will be a confident speaker. Hi, we are here today with yet another exciting challenge, the Tongue Twister Challenge. And this challenge is between mama and daughter. So Chantal, can you explain us the rules of the game? Sure. Hi, my name is Chantal and I have a couple of tongue twisters here. So let me just quickly tell you how the game works and the rules of the game. The first rule of the game is we have to pick up one chit and repeat it 4 times. And in those 4 times, if any one of us fumbles or makes a mistake, we lose our point. So let's start with mom. Oh, so I'm first. Let's see what's there for me. So what do I have here? It's a little difficult, but I'll give it a try. A double bubble gum bubbles double. So Chantal, do I have to say it 4 times? Yes. Okay, so here we go. A double bubble gum bubbles double. 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 Wow. Yippee, I did it. Now Chantal, it's your turn. Okay, so I've got a difficult one right in my hand. Why not give it a try? She sees cheese. 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 Yippee, Chantal, you did it. Now let's see what's there for me. Oh, lucky, I've got an easy one. So my tongue twister is Harry has a hamster. 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 Wow. Oh, I could do this. Now Chantal, let's see what's there for you. I truly need this point. Please wish me luck. Cooks cook cupcakes quickly. Okay. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Whoa,
So we both won the game. It's a tie. Wow, it's a tie and we both did it. Excellent. I'm sure you all have loved it. Please go and play with your parents and grandparents and have loads of fun. Hello everyone. So now another tongue twister. I scream, you scream, and we all scream for ice cream. So now let us be quick. I scream, you scream, we all scream for an ice cream. हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो? चलो एक खेल खेलते हैं. आओ खेले एक खेल टेढ़ी मेढ़ी फिसलती जुबान का. बोले हम कुछ शब्द जल्दी जल्दी, बोले हम कुछ शब्द जल्दी जल्दी, बन जाए अफसाना हमारी जुबान का. ठीक है, तो चलो टंग ट्विस्टर मैं तुम लोग को बोल के सुनाती हूँ. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. एक बार फिर से बोलती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता. वाह, मैंने बोल दिया. अब तुम लोग की बारी. तुम लोग भी इसी तरह से कोई टंग ट्विस्टर्स बनाओ और बोल कर देखो. ठीक है, पता है इससे क्या होगा? इससे हमारा दिमाग, स्मरण शक्ति तेज होगी, हमारी जुबान साफ होगी. और जब हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त तेज हो जाएगी तो हम लोग का लेसन भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा. टंग ट्विस्टर हमारे लिए कितना लाभकारी है. तो क्यों ना हम लोग टंग ट्विस्टर्स की आदत डालें, उसके लिए बोल बोल कर तैयारी करें. मजेदार, खूब मजा आएगा. ठीक है, चलो बोलकर वीडियोस बनाओ और हम लोग को भेजो.
अरे वाह आशीष सर, क्या बात है, आपने तो मेरे शब्दों को कागज पर उतार दिया, रंगों से जीवंत कर दिया। क्या बात है आशीष सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे शिखा, अब तुम्हारी बारी। शाम का समय है भाई, कुछ नाश्ता वाश्ता बना रही हो कि नहीं? पापड़ आपड़, कुछ पापड़ में कर लो। पापा इन द किचन। ओह, नया अवतार पापा का इस लॉकडाउन में। मम्मी नहीं पापा, 5 पापड़ तो सेक कर लाना। 5 पापड़? 5 पापड़ कच्चे पापड़, 5 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। अरे ये तो बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बन गया है। चलो इसे स्पीड में दोहराते हैं। 5 पापड़ कच्चे पापा, 5 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। 5 पापड़ कच्चे पापा, 5 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। तो चलो कौन बाजी मारता है और कौन इस टंग ट्विस्टर को 5 बार दोहराकर बताता है? समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अब बारी आती है हिंदी टंग ट्विस्टर की। वीडियो देखो और पहचानो कौन सा टंग ट्विस्टर है। यू आर राइट। चलो शुरू हो जाओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चलो आपकी बारी, शुरू हो जाओ। Hi, I'm sure you have enjoyed the last one, the one with ch. Now, the next one is on p. Come on, start with me. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. Let's do it again. 1, 2, 3, start. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. Okay, now you say it 5 times and you win the game. Thank you. गडबड गुंडा असा हा गडबड गुंडा, जिभेच्या रामाचा असा हा मजेदार फंडा. गडबड गुंडा असा हा गडबड गुंडा, जिभेच्या रामाचा असा हा मजेदार फंडा. आई, अगं आई, काय करू सांग ना, कंटाळा आलाय मला. काय करूया? बरं, आपण गडबड गुंडा हा खेळ खेळूया का? गडबड गुंडा हा कोणता नवीन खेळ? अगं, गडबड गुंडा म्हणजे जिभेला व्यायाम, शिवाय आपले उच्चारही सुधारतात. हो का? मग सांग ना कसा खेळायचा. बरं, मी तुला एक वाक्य देते, तू ते वाक्य न थांबता 10 वेळा सतत बोलायचे. मग सांग. कच्ची पपई पक्की पपई, कच्ची पपई पक्की पपई. बोल पाहू. कच्ची पपई पक्की पपई, कच्ची पपई पक्की. अगं, इतक्या हळू नाही, 10 वेळा पटापट बोल.
कच्ची पपई पक्की पपई, कच्ची पपई पक्की पपई, कच्ची पपई पक्की पपई. हिला काही जमत नाही. तुम्हाला जमतं का पहा. आई आई हा बघ माझा पतंग किती छान आहे ना. आता मी रंग भरणार. कोणी त्याला गुल नाही करू शकणार. कोणी गुल नाही करणार. थांब, मीच तुला तुझा पतंग गुल करून दाखवते आणि तो पण शब्दांच्या जादूने. 7 वेळा 7 वारे, 7 वेळा 7 वारे, 9 वेळा 9 दिशा, पकडमिटी पकडमिटी, अस्वलाच्या लांब मिशा. 3 वेळा 3 13, 3 वेळा 3 13, 5 वेळा 5 बोटे, 5 वेळा 5 बोटे, अक्कडमिटी मक्कडमिटी, डाशामधले लांब काटे. 7 वेळा घेतला पेज, 9 वेळा दिली गुल, अक्कडमिटी पकडमिटी, तुझा पतंग झाला गुल. काय मग मुलांनो, तुम्ही पण अशी गंमत करून बघणार का? मग बोलून बघा बरे. कळलेलं कळलं हे कळलेल्याला कळवलं की कळलेलं कळलं हे कळलेल्याला कळेल. पुन्हा एकदा सांगते, नीट ऐका. कळलेलं कळलं हे कळलेल्याला कळवलं की कळलेलं कळलं हे कळलेल्याला कळेल. करून बघाल ना. गडबडगुंडा रे. अरे काय गोंधळ चालला? कसला गडबडगुंडा? तुला काय काम दिसत नाही? चल मला मदत कर. आई 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 खूप काम झालं. चल ना आधी चल. मला वेळ नाहीये. मी मदत करीन नंतर. बरं, एक ठेवते. सांग काय चॅलेंज आहे तुझं? मी जे वाक्य बोलतो ते 8 वेळा न चुकता बोल. अरे हा तर आमच्या लहानपणीचा खेळ होता. मी त्यात एक्सपर्ट होते. बोल तुझं वाक्य. मग बोल. चटईला टाचणी टोचली. चटईला टाचणी टोचली, 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 चटईला टाचणी टोचली. ये. आता मी घेतलं की नाही तुझं चॅलेंज? तू माझं चॅलेंज घे. बोल. काळे राळे गोरे राळे, 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 काळे राळे गोरे राळे. शाबास. काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोळे डाळे. डाळे डाळे. अगं काय चाललंय तुझं श्रुती? एकटीच बडबडतेस आणि हसतेस. आई, मी ना मराठी टंग ट्विस्टर होते. चल तू पण ट्राय कर ना. थांब, मी तुला वेगळं वाक्य देते. लहान नाणं मोठं नाणं हे वाक्य तू 20 सेकंदात 10 वेळा बोल. 20 सेकंदात 10 वेळा. थांब, मी ट्राय करते. लहान नाणं मोठं नाणं, 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 लहान नाणं मोठं नाणं. Hello children. Today I am here to assign you 2 tasks. One is that you have heard a number of tongue twisters in this video and we will be hearing more. So I want you to make an original tongue twister. For that, it's very easy. Just grab a notebook and then write a few homophones and write a few rhyming words. And just use some conjunctions and make a sentence in which will be a bit complicated and which can be which you can be rhyming. Okay, so in that way you create your new tongue twister. And now I'm going to say our tongue twister and you're going to repeat it a number of times. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Happy tongue twisting.
what I draw. My tongue twisters. What it is? I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Now your turn. Hello everyone. I hope you all are enjoying tongue twisters. Yes, जैसा कि आप सभी ने देखा हमारे ड्राइंग टीचर्स ने कितना ब्यूटीफुली एंड इफेक्टिव वे इन अ सिंपल वे दे ड्रॉ ब्यूटीफुल टंग twisters. So now it's your turn to draw tongue twister and send us on our Facebook page. Yes, Gundecha Education Academy Kandivali Facebook page, and you can send us directly. So enjoy your tongue twisters. Really, Gadi, really. धरमपुर मैंगलोर मांडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर रायपुर मालेगांव तालेगांव नेल्लूर सोलापुर. It's finally an end to Tagalog, the Don't Love Challenge show. Continue practicing tongue twister. Enjoy!